Welcome everyone to English Wings. Today we are going to discuss Shall I Compare Thee by William Shakespeare. This poem is also known as Sonnet number 18 of William Shakespeare. We know that William Shakespeare used to write many sonnets that are nowadays very famous. Since then, we are studying those sonnets as they are representing the English features that were written by William Shakespeare. So first of all, here is a short introduction of poet. William Shakespeare, also called Shakespeare, also spelled Shakespeare, by name Bard of Avon. He was known as Bard of Avon. That was very common name of him. The Swan of Avon, English poet, dramatist and actor, often called the English national poet and considered by many to be the greatest dramatist of all the time. So he was known as English national poet. Published in 1609, the sonnets were the last of Shakespeare's non-dramatic works, because sonnets doesn't have any character. Sonnets represent a situation, a factual situation. Scholars are not certain when each of the 154 sonnets was composed. So we can see that Shakespeare wrote about 154 sonnets. But evidence suggests that Shakespeare wrote sonnets throughout his career for a private readership. He used to write that for a private readership. Even before two unauthorized sonnets appeared in Passionate Pilgrim in 1599, Francis Meres had referred to 1598 Shakespeare's secret sonnets among his private friends. So these were the about his sonnets, and now we can see that it remains unclear if the figure represent real individual. He has written the mainly two contrasting series, that is one about uncontrollable lust for a married woman and one about conflicted love for a fair young woman. So we don't know that these two characters are imaginary or real, but William Wordsworth believed that they were love for Shakespeare. They were the love of Shakespeare, that he unlocked his heart in these characters. Written by English poet and playwright William Shakespeare. The poem was likely written in 1590s, though it was not published until 1609. तो 1590 में लिखा जाने के बाद भी 1609 तक ये publish नहीं हो पाया. Like many of Shakespeare's sonnet, the poem wrestles with the nature of beauty and with the capacity of poetry to represent that beauty. Praising an anonymous person, the poem tries out, एक यहाँ पे anonymous person के बारे में बात हो रहा है, जो कि एक young man है जिसका name mention नहीं है, tries out a number of cliche metaphors and similes and finds each of them wanting. तो वो उस यंग मैन के लिए बहुत सारे सिमिली मेटाफोर यूज करते हैं शेक्सपियर. इट देन डेवलप्स अ हाईली ओरिजिनल एंड अनयूजुअल सिमिली. द यंग मैन्स ब्यूटी कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग हिम टू द पोएम इटसेल्फ. तो वो पोएम का कंपैरिजन उस यंग मैन से होता है, बिकॉज उस यंग मैन के लाइफ को उस पोएम के थ्रू इटर्नल किया जा रहा है. Sonnet 18 is essentially a love poem, though the object of his affection is not as straightforward as it may first seem. तो फर्स्ट में समझ में नहीं आता कि ये लव किसके लिए है. Yet as the speaker searches for a metaphor that would adequately reflect his beloved beauty, वो अपने beloved के beauty को बहुत ज़्यादा appreciate करते हैं. He realizes that none will work because all inevitable decline and death. हर एक चीज़ एक ना एक दिन डिक्लाइन हो जाता है, डेथ हो जाता है हर एक चीज़ का. Where the first 8 lines of poem document the failure of poetry's traditional resource to capture the young man's beauty, the final 6 lines argue that young man's eternal beauty is best compared to the poem itself. So ये poem 2 parts में divided है, first 8 lines and then 6 lines. The first 8 lines are about young man's beauty and then the 6 lines are about the comparison of the young man to the poem. In a strikingly circular motion, it is this very sonnet that both reflect and preserves the young man beauty. इस sonnet के थ्रू, इस poem के थ्रू ही young man के beauty को preserve किया जा रहा है, save करके रखा जा रहा है. Sonnet 18 can thus be read as honoring not simply to the speaker's beloved but also to the power of poetry itself. So इससे हम समझ सकते हैं कि शेक्सपियर के लिए पोएट का, पोएम्स का, वर्ड्स का, सोनेट का कितना वैल्यू था, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू preserve his friend's beauty in the words of a poem which the speaker argues is means to eternal life. और उनके अकॉर्डिंग एक पोएम के वर्ड्स में किसी की लाइफ को भी इटर्नल करके रखा जा सकता है. So let us start with the text of the poem. Shall I compare thee to a summer's day? तो shall I compare you
टू अ समर्स डे। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि शैल आई कंपेयर यू, क्या मुझे आपको कंपेयर करना चाहिए एक समर के डे से। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, बट वो बोलते कि यू आर मोर लवली, तुम ज़्यादा लवली हो, तुम ज़्यादा टेम्परेट हो, मीन्स आप ज़्यादा मॉडरेट हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, क्यों आप ज़्यादा अच्छे हो? बिकॉज रफ विंड्स जब आते हैं, जब विंड चलते हैं तो क्या करते हैं वो डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो मे मंथ में जो एक बर्ड्स आते हैं प्लांट्स पे, वो प्लांट्स के जो बर्ड्स होते हैं वो विंड्स के थ्रू शेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एंड समर्स लीज, समर का जो एक पीरियड होता है रहने का, समर का जो टेम्परेरी पीरियड है, हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट, वो बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, समर सीजन हमेशा नहीं रहता है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, आई ऑफ हेवन मीन्स द सन। You will get all the meanings at the end of the video, so please watch till the end of the video. समर स्लीव्स जो होता है, समर का जो टेम्पररी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बिकॉज द आई ऑफ हेवन जो सन है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा शाइन करता है, एंड ऑफन इज इज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी इसका गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम हो जाता है, डल हो जाता है। बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, और इस तरह से नेचर का जो कोर्स है, नेचर का जो एक पैटर्न है वो हमेशा चेंज होते रहता है, अनकट रहता है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, पर आप तुम्हारा जो समर है, तुम्हारा जो इटर्नल समर है वो कभी फेड नहीं होता। नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओस्ट, और ना ही तुम्हारा जो एक फेयरनेस तुम्हारे अंदर है वो कभी लूज करोगे तुम। नॉट शैल डेथ ब्रैक द वंडर्स इन शेड, और ना ही डेथ तुम्हें वंडरलस्ट बनाकर अपने आप पास लेके जाएगा। When in eternal lines to time thou grows, तुम इन इटर्नल लाइन में हमेशा ग्रो करोगे, हमेशा रहोगे। So long as men can breathe और eyes can see, जब तक इस अर्थ पे men can breathe और eyes can see, तब तक till then you will live here in these lines. So long live this. This means this poem, and this give life to thee. This मतलब यहाँ पे poem, the poem give life to you, the means you, this poem is going to give life to you, that means the poem is going to make eternal. So here are the meanings, please note down the meanings, because Shakespeare always used to write in a different manner of English that is not very common to us, so you have to know the meaning because they are very easy, but कॉमन एक नॉलेज होना ज़रूरी है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस मीनिंग्स, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।